গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত য'ত মহিলাক মাহিলী 1500 টকা দিয়া হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে কৃষকৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল ৰেহাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ নামৰ কৃষকে এটকাও দিব নালাগে এনেদৰে এতিয়া বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এই সিদ্ধান্ত য'ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই অভিনৱ পদক্ষেপ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৃষকক ৰেহাই দিয়া হ'ব বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা বিদ্যুৎ মাচুল ভৰিব নালাগে কৃষকসকলে চৰকাৰক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ নামত দিব নালাগে এটকাও পইচা কৃষকসকলে আৰু প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত কৃষকে লাভ কৰিব 5000 টকাৰ বোনাছ 5000 টকাৰ বোনাছ লাভ কৰিব কৃষকসকলে মহিলাসকলৰ বাবেও মাহিলী 1500 টকাকৈ বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে মাহিলী 1500 টকাকৈ দিয়া হ'ব 21ৰ পৰা 60 বছৰৰ মহিলাৰ বাবে এই আঁচনি হ'ব প্ৰযোজ্য আৰু হিতাধিকাৰী হিচাপে এনেদৰে মহিলাসকলে লাভ কৰিব প্ৰতি মাহে মহিলাৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব এই টকা বা এই ধন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে বছৰি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ সুবিধা চিলিণ্ডাৰ গেছ লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ 10000 মহিলাই ই-ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা 3% VAT হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সিন্দে চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ সিন্দে একনাথ সিন্দে চৰকাৰে লৈছে এই সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচনলৈ 4 মাহ থকাৰ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে এতিয়া একনাথ সিন্দে চৰকাৰে পুনৰবাৰলৈ কৈছো এটা ডাঙৰ খবৰ সিন্দে চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেটত বিশেষ সকাহ ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জোৰাৰ চেষ্টা কৰিছো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্দে চৰকাৰে লৈছে এই সিদ্ধান্ত কৃষকক ৰেহাই দিয়া হ'ব বিদ্যুৎ বিলৰ পৰা চৰকাৰক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ নামত এটকাও দিব নালাগে এতিয়া কৃষকসকলে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু কেৱল ইমানেই নহয় মহিলাসকলক মাহিলী 1500 টকা দিয়া হ'ব বেংক একাউণ্টত মাহিলী 1500 টকা জমা কৰি দিয়া হ'ব এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা কৰিছে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্দে চৰকাৰে এনডিএ চৰকাৰ মিত্ৰজোঁটত থকা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে লক্ষণীয়ভাৱে ৰন্ধন গেছ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব লাখ লাখ কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকক এই সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ সিন্দে চৰকাৰে প্ৰতিমাহে মহিলাৰ একাউণ্টত পোনে পোনে সোমাব 1500 টকা আৰু সমান্তৰালভাৱে কৃষকৰ বিদ্যুতৰ বিল ৰেহাই দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হ'ব 10000 মহিলাই ই-ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা 3% VAT হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্দে চৰকাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সিন্দে চৰকাৰৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ কৃষক মহিলা সকলোৰে বাবে এটা সুবিধাজনক খবৰ বা ভাল খবৰ য'ত চৰকাৰে এনেদৰে এটা বৃহৎ সকাহ দিবলৈ গৈ আছে ৰাজ্যখনৰ কোটি কোটি নাগৰিকক এই মুহূৰ্তত কিছু মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম शिंदेजींच्या नेतृत्वात एक अतिशय प्रगतिशील सर्वसमावेशक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प हा त्यांनी सादर केला आहे आणि विशेषतः शेतकरी महिला युवा मागासवर्गीय अशा सगळ्या घटकांना समर्पित अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे उद्धवजी म्हणाले हा थापांचा अर्थसंकल्प आहे हा थापांचा नाही हा आपल्या मायबापांचा अर्थसंकल्प आहे कारण शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करण्याचा निर्णय घेणारा महिलांकरता विविध योजना आणणारा युवांना रोजगार देणारा अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे आताच विरोधी पक्षाचे लोक या ठिकाणी बोलत होते आणि आम्ही टेलिव्हिजनवर बघत होतो
त्यावेळी त्यांच्या बोलण्यात जोर नव्हता, त्यांच्या चेहऱ्यावर नूर नव्हता, चेहरे उतरलेले होते आणि केवळ टीका ते करत होते. पण मला असं वाटतं हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन इतिहास तयार करणारा आहे आणि म्हणून यावर सविस्तर प्रतिक्रिया माननीय अर्थमंत्री देखील देणार आहेत, माननीय मुख्यमंत्री देखील देणार आहेत. मी केवळ एवढंच सांगतो, या अर्थसंकल्पामध्ये जे जे आम्ही कबूल केलेलं आहे ती प्रत्येक गोष्ट त्या त्या विविक्षित वेळेमध्ये आम्ही पूर्ण करून दाखवू आणि अर्थसंकल्प म्हणजे हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प नाही तर हा निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे हे आम्ही निश्चितपणे दाखवू. मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी, त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय करतील. शिंदेजींच्या नेतृत्वात एक अतिशय प्रगतिशील, सर्वसमावेशक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प हा त्यांनी सादर केला आहे आणि विशेषतः शेतकरी, महिला, युवा, मागासवर्गीय अशा सगळ्या घटकांना समर्पित अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. उद्धवजी म्हणाले हा थापांचा अर्थसंकल्प आहे. हा थापांचा नाही, हा आपल्या मायबापांचा अर्थसंकल्प आहे. कारण शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करण्याचा निर्णय घेणारा, महिलांकरता विविध योजना आणणारा, युवांना रोजगार देणारा अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे. आताच विरोधी पक्षाचे लोक या ठिकाणी बोलत होते आणि आम्ही टेलिव्हिजनवर बघत होतो, त्यावेळी त्यांच्या बोलण्यात जोर नव्हता, त्यांच्या चेहऱ्यावर नूर नव्हता, चेहरे उतरलेले होते आणि केवळ टीका ते करत होते. पण मला असं वाटतं हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन इतिहास तयार करणारा आहे आणि म्हणून यावर सविस्तर प्रतिक्रिया माननीय अर्थमंत्री देखील देणार आहेत, माननीय मुख्यमंत्री देखील देणार आहेत. मी केवळ एवढंच सांगतो, या अर्थसंकल्पामध्ये जे जे आम्ही कबूल केलेलं आहे ती प्रत्येक गोष्ट त्या त्या विविक्षित वेळेमध्ये आम्ही पूर्ण करून दाखवू आणि अर्थसंकल्प म्हणजे हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प नाही तर हा निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे हे आम्ही निश्चितपणे दाखवू. मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी, त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय करतील. हिंदीमध्ये एक फक्त प्रश्न विचारतो सुरुवातीला. उद्धव ठाकरे एकत्र युतीमध्ये बोलले, 4 पटते. जयंत पाटील बोलले, जयंत पाटील असं आहे की ऐसा है, जयंत पाटिल या विपक्ष के सारे नेता ये पहले ही लिखकर लाते हैं कि बजट पर क्या बोलना है. तो बजट हम कैसा भी पेश करते तब भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती, स्टीरियोटाइप प्रतिक्रिया है. उनके चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे की चमक चली गई है. जो उनको लगता था